Okay, so today is your very first class of sociology optional. So before that, I would like to once again ask you all who are studying sociology for the very first time, who do not have any background in sociology. You can raise your hands in the chat box. How many of you do not have any background? Priyanka, Prabhan. And rest of you? बाकी बाकी ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ସୋସିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। No ma'am. ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେବ ଟିକେ ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଖିବା. Okay, some key terminologies which is going to help you ahead. The one who have never studied sociology, it is a overview for you to the world of sociology. और जे माने already पढ़िचो एटा तुम पाई रिवीजन भलिया हि जिवो. ओके, तो मु पहला बेलकु इंग्लिश आ ओडिया दुईटा मिक्स करके कहबी. जदि किछि जगह रे बुझा पड़ोनी then you can ask me to repeat. Okay, is it fine? Yes ma'am. Okay, so do not hesitate anywhere. If you find anything confusion or you think you have not understood, you can ask me. Okay, today's class will be very light-hearted. It's all about introducing you to sociology. आमे केते terminologies देखिबा. Sociology as a discipline काहे की establish हेतिला, what is the reason behind it, who were the founding fathers. We are going to discuss about all those things in today's class. Okay, all right. So let me first share my screen. Visible hoji? Slide visible hoji to everyone? Yes ma'am. Yes. So whenever if you have to say anything or if you want to answer anything, you can unmute yourself and speak. Okay, so let's begin. Introduction to sociology. Agar tikke ame first 15-20 minutes ame dekhiba about the background of the subject. Hala. Tapre ame terminologies ko proceed karibo. So first, those who already know about the subject, tell me what is sociology? What do you understand by the term or the subject sociology? Sociology mane kona? Ma'am, sociology is the sociology is the study of society. Okay, sociology is the study of society. Okay, fine. Okay, Vaibhav. Okay, Vaibhav. No one. But का आसुनी? Sociology तमरो दुईटा word रो derived हेची. Can anyone say what are those two words? Socio and logos. Socios and logos. Okay. तो sociology term टा दुईटा word रो derived हेची. A Latin word socios, okay, which means companionship or togetherness. Okay, and another Greek word logos. Logos means to study. Okay. So basically, sociology is what? The systematic study of the society. And what is forming the society? Society कौन consist करूँ? Society रे components कौन society रो? What are the components of society? What is
forming a society. এটা ওটা আমার ইন্ডিয়ান সোসাইটি হলা তারপরে তুমি তুমি যে জায়গায় রহুছো যে এরিয়ায় রহুছো that is also a society, right? So what are the components of society? Social relationship, social behavior, social interaction, then social institutions like marriage, family, religion, okay, economy, caste, even when it comes to Indian terms, right? These are the components of society. This is how society is created, right? This together forms the society. So we can say sociology is the systematic study of society and social relationships, then social behavior, social institution, social interaction. This is what sociology, the subject sociology studies. Okay, so here I have given the definition. As you can see, sociology can be defined as the systematic study of society or social life, of group interaction and of social behavior. Sociology is the study of human social behavior, okay, relationship and institutions. Now देखो sociology रो subject matter टा टिके बाकी subjects रू अलगा. No doubt it has components of all the subjects. जहाँ political science है तुम पढ़ो जो sociology रे भी टिके similar जिनसे देखिए आपको मिलेगा, है ना? इकोनॉमी रे जहाँ पढ़ो जो तुमको सोशियोलॉजी रे भी से जिनसे देखिए आपको मिलेगा. साइकोलॉजी और स्पेशली साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को तुम्हें बहुत ही सिमिलर देखिए आपको मिलेगा. बट टिके डिमार्केशन रहुची से जागा रे. ओके, टिके सब्जेक्ट मैटर डिफरेंस रहुची. तमरो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कौन स्टडी करूची? व्हाट इज साइकोलॉजी स्टडी? A study of human behavior. Human behavior and about human mind, right? Yeah. और तुम्हारा सोशियोलॉजी कौन करूची? तुम्हारा it is only studying the social behavior. Okay. तुम्हें तुम्हारा पर्सनल स्पेस रे गुटे अलगा इंडिविजुअल हेकि रहउचो आ तमे बाहर जेतले सोसाइटी बाहर को आउटर वर्ल्ड को जाउचो सेतले तुम्हारा गुटे अलगा पर्सनालिटी रहउची, राइट? That is your social personality. That is your social, whatever you are behaving or your the way you are interacting, or you can say it is your social life. There is a personal life and there is a social life, right? एथरे तुमे पढिबो गुटे बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर अछंती GH मिड. नुआ नुआ थिंकर्स विषय तुमे जानिबो गुटे फर्स्ट नाटा मने रखिथो GH मिड. से देथिले लुकिंग ग्लास सेल्फ विषय रे गुटे theory टे अछि. You don't need to know about it, but it is very interesting. You can see it later on. Sorry, looking glass self. Looking self. Okay. तो जेतेले तमे तुम पर्सनल स्पेस रे रहउचो, you consider yourself as I. Okay. और जेतेले तमे सोशल स्पेस रे रहउचो, there you consider yourself as me. एमती वाली से गोटे देथिले. आउ तमे से ड्रामेटर्जी विषय रे भी से सेथरे गोटे कांसेप्ट अछि that you are and how you are behaving in your personal space and how you are behaving around the people in the society. Okay. Ketara jinso as an individual, a version of you that only you know, and there is a version of you that you show to people. Okay, तुम फ्रेंड सामने रे तुम उडो अलगा बिहेवियर करूथिबो, तुम फैमिली सामने रे उडो अलगा बिहेवियर करथिबो, तुम फैमिली सामने मे भी तुम बहुत ही इनोसेंट आ बहुत ही सिंसियर छुआ हिसाब रे रहुथिबो. तुमरो फ्रेंड सामने रे टिके आउटवर्ड्स वेरी एक्सट्रोवर्टेड, वेरी फन लविंग तुम थिबो, राइट? तुमरो टीचर सामने रे तुम टिके बेसी माने रिस्पेक्टफुल हे कि तुम कोन होची सोसाइटी रो अलगा अलगा माने पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स या फिर अलगा अलगा जे भी तुम्हारे रिलेशनशिप्स अछि ता अकॉर्डिंग तुम कोन करछ तुम्हारे बिहेवियर चेंज करूछ, राइट? तो से जिंस गुटे तो सोसाइटी एबे तुम सोशियोलॉजी कोन करछ तुम्हारे सोसाइटी रे तुम सोशल लाइफ को स्टडी करूछ. ओके, सेथिरे तुम्हारे दुईटा पर्सपेक्टिव आसीबो. गुटे हला माइक्रो पर्सपेक्टिव आ गुटे हला मैक्रो पर्सपेक्टिव. हला micro perspective kono kurchi, from the word you know, it is understanding the society from an individual perspective. je tomar individual point of view asibo. jenti ki mu कहली looking glass self theory होची तारो example.
माइक्रो पर्सपेक्टिव रे तमे टिके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू देखिबो मैक्रो पर्सपेक्टिव कोन तमे सोसाइटल व्यू देखिबो सोसाइटी इन जनरल गोटे लार्जर वाइडर व्यू देखिबो हला और मोस्टली तमे देखिबो मोस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिकल थ्योरी आर बेस्ड ऑन मैक्रो पर्सपेक्टिव गोटे जनरलाइज्ड थ्योरी रहउची एंती गोटे सिंगल पर्सन की सिंगल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बेसिस रे थ्योरीज फॉर्म करा जाउनी कि सोशियोलॉजी से जिनस को बेसिस स्टडी करूची बट mostly inclined towards the macro perspective. Clear everyone? Micro and macro. What is micro perspective and macro perspective? Yes. ये दुईटा terms बुझिबा बहुत important because तमे आगो को ये terms frequently सुनिबो और frequently use भी करिबो theories पढ़ला बेलको. Clear? Yes, ma'am. Clear? Okay. So this is the definition of the subject sociology. Okay. तापरे सोशियोलॉजी रो जंती कहली केतरा फाउंडिंग फादर्स मे ओरिएंटेशन क्लास रे मो केते जण कहितली सबठु मेन हो जंती तमर के ऑगस्ट कॉम हला ऑगस्ट कॉम इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी he him and another sociologist was there तमर ना हला सिमेल आई गेस जॉर्ज सिमेल हला से दुई जण मिसी की फर्स्ट आइडिया प्रपोज करिथिले कि आमे गोटे एंती सब्जेक्ट क्रिएट करबा दरकार जोतरे आमे सोसाइटी रे जहां भी चेंजेस होची कि सोसाइटी रे जहां भी फेनोमेनास होची आमे सेटा को स्टडी करबा राइट दे वर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू थिंक अबाउट इट ओके तो गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर ओके आउ से चाहूतिले कि जेंती तमरो नेचुरल साइंसेस रे तमरो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एटा सब जीवो जेंती नेचुरल साइंसेस नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करचुंती अर्थक्वेक हला कि ग्रेविटी कोन मैग्नेटिक फील्ड कोन तमरो रेनफॉल काई की होची प्रेसिपिटेशन कोन से सब फेनोमेना राइट जेंती नेचुरल साइंसेस आर स्टडीइंग नेचुरल फेनोमेना जेंती गुडे हमें सोशल सोसाइटी रो गुडे साइंस क्रिएट करबा ओके he wanted to create a science for society to study society ला जेंती नेचुरल साइंसेस नेचुरल फेनोमेना को स्टडी कर जेंती हेंती हम गोटे साइंस क्रिएट करबा जेटा सोशल फेनोमेना को स्टडी करबा ओके आउ से सोसाइटी रो जहां भी फेनोमेना होची जेंती कि हमरो मैरिज गोटे सोशल फेनोमेना हला ओके तापरे तमरो अर्बनाइजेशन हला तापरे तमरो मॉडर्नाइजेशन हला संस्कृताइजेशन दिस आर सम काइंड ऑफ सोशल फेनोमेना व्हिच इज ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी राइट से सब सोशल चेंज काहे की होची से सब जिंस हमें स्टडी करबा हाउ वी विल क्रिएट अ साइंस एंड वी विल यूज साइंटिफिक मेथड टू डू दैट ओके तमरो सिलेबस रे गुटे यूनिट अछि अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी ओके सेथिरे तमे कोन सबु तमरो साइंटिफिक मेथड्स सोशियोलॉजी यूज करूची टू स्टडी सोसाइटी सेथिरे तमे डीपली पढिबो ओके सो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप इनटू इट बट दिस इज व्हाट द विजन of the founding father was to study the society in a scientific way systematic and scientific way ओके तो सेतिले से चाहतिले गुटे नुवा साइंस हमें क्रिएट करबा सोसाइटी पई आ इनिशियली से कहले ताकू ना देथिले डिसिप्लिन हला गुटे नुवा सब्जेक्ट या फिर नुवा डिसिप्लिन क्रिएट करबा से इनिशियली ताकू कहले सोशल फिजिक्स बोली ओके इनिशियली से डिसिप्लिन या फिर से सब्जेक्ट को से कहले सोशल फिजिक्स बोली तापरे तमरो परे केते वर्ष परे तमरो आ गुटे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट आसिले तांको ना हला इमैनुअल जोसेफ ओके से कोन कहले से टिके सोशल फिजिक्स रो ना को रीइन्वेंट करबा को चेष्टा करले सेटा को आ टिके एक्सप्लोर करबा को चेष्टा करले आ परे परे गुटे टर्म कॉइन करा गला टू दिस न्यू सब्जेक्ट to study the society in a scientific way as sociology okay तो
तमरो initially female भी थिले but mostly जदि जे तमे देखिबो the thinker which was associated with August Comte to form this new discipline was Saint Simon. Okay, Saint Simon plus August Comte. ए दुई जण मिसिकी चाहूथिले सोसाइटी रो गुटे न्यू डिसिप्लिन क्रिएट करा जाऊ, गुटे न्यू साइंस क्रिएट करा जाऊ. ओके, आउ जेंती तमरो नेचुरल साइंस नेचुरल फेनोमेना स्टडी करूची सेंते एई साइंस टा सोशल फेनोमेना स्टडी करू. ओके, सो एटा बुझा पड़ला अबाउट हाउ द vision about sociology started from August Comte and Saint Simon. Firstly से टिके से बेसी डीपली ए जिंस ऊपर काम करथिले बोली तांको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाउची. से ही द टर्म सोशियोलॉजी कॉइन करथिले. फर्स्ट से सोशल फिजिक्स बोली कहले, तापर 1838 रे सोशियोलॉजी बोली टर्म कॉइन करा गला. ओके, क्लियर till this part? Yes, ma'am. मैम ऑगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी वाले टर्म टा देखले ना इमैनुअल जोसेफ सोशियोलॉजी टर्म टा देखले ऑगस्ट कॉम्ट इमैनुअल जोसेफ टिके पर से सब्जेक्ट रो एटा को टिके रिफाइन करले बट टर्म टा तमरो ऑगस्ट कॉम्ट ही देथिले सेथिले तांको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोली कहा जाउची. ओके, आउ गुटे जिंस देखिबो तमरो अलगा अलगा जगह रे ईयर टा चेंज होची. कोथरे तम दिया देथिबो 1839, कोथरे तम दिया देथिबो 1838. ओके, so what I have seen and mostly in the books जोटा कि तमरो OPSC भी रेफर करिवो 1838 बोली दिया अछि. So I have taken this year. Okay, clear? तो हमें हमरो गुटे विजन स्टार्ट हला that we are going to study the society, the social phenomena. बिकॉज देखिबा तमे मोस्टली माने के माने सब फ्रेंच फिलोसोफर्स माने काहे कि फ्रेंच फिलोसोफर्स फ्रांस रो लोक माने सब एतके स्ट्रेस दोथिले सोसाइटी को स्टडी करबा पई बिकॉज वी कैन ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी फ्रॉम टू इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स. ओके, गुटे होची तमरो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आ गुटे होची तमरो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ए दुईटा हिस्टोरिकल इवेंट्स परे तम सोसाइटी रे बहुत ही मेजर चेंजेस आसीथिला. ओके, तो से टाइम रे कोन जतकी भी सब स्कॉलरली इंटेलेक्चुअल पीपल थिले, फिलोसोफर्स थिले, तो से माने चिंता करले कि हमर सोसाइटी रे इतकी बड़ा चेंजेस आसुची. what are the factors or why these changes are coming and how it is impacting various parts of the society. से जिंसो को हमको टिके स्टडी करवाटा दरकार because if we understand our society we are going to understand ourselves, right? We are going to understand and we can certainly predict our future, what is our future is going to look like, right? तो से सब जिंसो टिके बुझवा चेष्टा करथिले तमरो मोस्टली फ्रेंच फिलोसोफर because फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर तमे देखिबो से सोसाइटी रे बहुत से चेंजेस आस्तिला. स्पेसिफिकली तमरो आफ्टर यूरोप रे मॉडर्निटी जतला आसिला, मॉडर्निटी मोस्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर सारा यूरोप रे मॉडर्निटी तमरो स्प्रेड ही जेतला. मॉडर्निटी आसिला पर कोन हला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऊपर फोकस करा वाला से शुरू कोन हला इंडस्ट्री सेटअप हला, अर्बनाइजेशन हला, रिलीजन रो इन्फ्लुएंस टिके कमी कमी गला. ओके, से विषय हम डिस्कशन करबा. ओके, विल डिस्कस इट. So say सब through कौन हला बहुत से changes आसिला in various components, various parts of the society. So mostly you will see Western thinkers, they wanted to establish a discipline where they can study society, various components of the society and how they are compelling to a new change. Okay, so now my question, we are going to study society. What is society? सोसाइटी माने कोन? What is society? तमे देखला सोशियोलॉजी इज
the systematic study of society. Society रे आमे केमती social relationship establish करूछु, so what are our social behavior, social interaction, social institutions, right? So what is society? Society माने कौन? Tell me first, what is the basic unit of a society? What is basic unit of society? I'm audible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आंसर कहीं दो ना कहो. What is the basic unit of society? Society का basic unit कौन? Family is the I mean, individual. Yes, absolutely. Individual is the basic unit of society, right? So group of individual together they form society. Out tomorrow group of individual भितरे जितने social interaction, social relationships, out tomorrow social behavior जितने से मने establish करिबे, that will together form a component of society. Now tell me what is society? तमे केंती define करिबो? मैं तुमको पचरेली what is society बोला, how you will define society? Ma'am, group of people live together and Live together and Ma'am, share common interacting with each other. interacting with each other and and They share have common culture norms. yes, share common culture, Yes, norms, values, right? So we can say basic component of society kono? Individual. So we can say society is or society consists of a group of individuals okay, and they share common culture, values, norms, ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ culture under norms, values ଏଟା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ, okay? And they reside or they occupy a defined geographical area. Okay, and they interact with each other. And they participate in their social life. Okay, social life is very important. ସବୁ ଜିନିଷ social ରେ ଆସିକି ଲଟକି ଯିବ ଏଠି, okay? Okay. So this is what society is. Society रो basic unit होची individual. ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା elements ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତି କି ତମର culture ଆସିଲା, social institution ଆସିଲା, okay? तमरो family is a component of society again. All right, so this is the basic तमरो definition of society. तो एबे हमें देखला तमरो society रो definition एटी गुडे important जिंस मु कहली culture, okay? And you also said that people in a society share common culture. So now my next question is, what is culture? What do you understand by culture? Culture माने कोन? How you are going to define culture? Culture would term हमें बहुत frequently use करो, right? So what is culture? A group of people share values, customs, and practices. Practices, okay. Okay, fine. आओ के टिके better define करि परिबो, ठीक कहलो? टिके आउ टिके better. Anyone? ma'am, a common language, value or norms. Okay. Culture hochi, in simple words we can say culture is the way of life.
Okay, the way you are leading life with the language, with the values, with the norms, with the customs, tradition, the food, your dressing style, okay, your way of talking, your behavior, everything comes under culture. Okay, आउ देखिबो सब culture Indian society देखिबो there are different types of culture. Okay, multiple culture you will find every 100 kilometers, every 10 kilometers you will find a different new different kind of culture, right? ସେଥିରେ ତମର dialect change होची, तमरो टिके norms change होची, तमरो values change होची. Okay, so in simple way we can say culture is the way of life and it includes तमरो customs, जिंदगी तमे कहलो custom, traditions ना, तापरे norms माने तमरो rules regulation. Okay, तापरे तमरो values, language, तमरो food habits केमती रहउची, तमरो dressing style केमती रहउची. Okay, all these things include or comes under your culture. Okay, the food habits of Odia people and the food habits of say Kashmiri people are very different, right? The dressing pattern of Odia people and the dressing pattern of Maharashtrian people are very different, right? So what this is signifying our culture, this is resembling our culture, our culture alga alga achi, right? And this is how we are leading our life. So our culture also help us to establish our unique identity. Okay, तमे जो कोनोसी भी कल्चर बिलोंग करो से कल्चर तुमको गोटे यूनिक आइडेंटिटी दोची, right? You are a Odia people, you have your unique culture and for that you are known in a very different way, you are getting a unique identity. सेमती तमरो Bengali people, Assamese people, Meghalaya, Nagaland people, समस्तंकर गोटे अलगा अलगा कल्चर अछि, right? And they are for which they are getting a unique identity. And the Indian people, as an Indian people coming from Indian society, we have a different culture, so we have a unique identity. People coming from Australia or New Guinea or Zimbabwe, they also have different culture and have a different identity, so it gives it as a unique identity in the society, right? So this is culture. So ame dekhila what is society, what is sociology. तो sociology तमे देखिबो mainly as a subject want to address 3 important questions. Okay, sociology want to address as a subject. Okay, तीनटा questions थ्रू से मुझको address करूची. First, how and why society emerged. Okay, second, how and why society persists. Okay, third, how and why society change. Okay, ये तीनटा क्वेश्चन मोस्टली तमरो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एक्सप्लोर करूची. सोसाइटी काहे के एमर्ज हला, कि केमती एमर्ज हला, हाउ एंड व्हाई. ओके, एंड सोसाइटी एबल जाई केमती परसिस्ट करी के रहूची, हाउ इट इज एबल टू सस्टेन, एंड हाउ एंड व्हाई सोसाइटी चेंज. सब सोसाइटी रे चेंज काहे के आछी. सोसाइटी रो गुटे सबटु इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हला दैट इट इज डायनामिक, it is prone to change. Irrespective of the society, you will see there will be some or other form of change. May it be in a large scale or it may be in a small scale. Change is inevitable in the society, right? Change is the universal thing. So, se sobu jinsa kahe ki hochi. This is what sociology as a subject is trying to address. So, as we will move forward with the terminologies and as we will move forward with the optional itself, तमे ये तीनटा क्वेश्चन को तमे देखिबो, तमे एक्सप्लोर करियो मोस्टली, एंड दिस 3 क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय द एंड ऑफ द कोर्स. ओके, ये हाउ सोसाइटी इमर्ज्ड,
how and why society persists, and why changes are happening in the society. Okay, so first your question, how and why society emerge, तार आंसर मु तुमको एबे देबी हैला. तो हमरो फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम हैला से देथिले गुटे थ्योरी. This is very important. Tomorrow it mentioned he knew, but it is important for you to understand. Law of 3 stages. Ella, से कोन कहथिले से इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को से डिस्क्राइब करथिले इन लॉ ऑफ 3 stages. ओके, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी केमती इवॉल्व हला. तो से सोसाइटी को तीनटा कैटेगरीज रे कहले, तीनटा कैटेगरीज रे सोसाइटी इवॉल्व होची. फर्स्ट आसला तमरो थियोलॉजिकल स्टेज, तापर आसला मेटाफिजिकल स्टेज, Scientific. yes absolutely, scientific stage, last आसला scientific stage. ओके, तो के कहि पारिबो थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल साइंटिफिक स्टेज कोन के एक्सप्लेन करबा को चाहिबो. Theological is the religious. Metaphysical is the philosophical. हां, And scientific is the positive stage. पॉजिटिव स्टेज. ओके, साइंटिफिक स्टेज रे कोन आला मोस्टली साइंटिफिक स्टेज रे माने कोन होला, हमर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हला, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग हला, राइट. ए सब जिंस हला ना, राइट. सो थियोलॉजिकल स्टेज को तमे जंती कहलो, इट इज आल्सो नोन एज फिक्शियस स्टेज. एथिरे कोन तमरो बिलीव ऑन रिलीजन, बिलीव ऑन सुपरनैचुरल पावर, डिवाइन फोर्सेस, से जिनसटा बहुत डोमिनेंट करूथला तमरो इंडिविजुअल रो माइंड रे. किछि जिनस गुटे हला माने एबे जेंति कि एबे खरा होची, तापरे केते दिन पई रेगुलरली खरा हला पर कोन तमे देखुथबो टिके लो प्रेशर क्रिएट हिकी वर्षा ही जाउची, राइट. तो से टाइम रे कोन इटा तमरो थियोलॉजिकल स्टेज माने प्रिमिटिव स्टेज, जेतले टिके टिके ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हेतिला. से टाइम रे इतकी नॉलेज नथिला, राइट. पीपल वर गेटिंग वरीड एंड कंफ्यूज्ड कि एतकी दिन खरा होतिला सडनली वर्षा काहे कि होची. मे बी के गोटे थिबे, गोटे देवता थिबे, रेन रो गॉड या फिर थंडर रो गॉड, से बोधे कि जे भी माने जे भी गॉड अछंती जहा को से माने बिलीव करथुले, ही इज और शी इज एंग्री, इतले वर्षा होची. ओके, कि थंडर स्ट्राइक कला काहे कि सडनली एंती बिजली गुडेटा होची, कि गोटे माने कि भूत प्रेत किछ गोटे थिबो, इतले हमको डरेवा लागि सब जिंस होची. माने everything or every aspect of a life of a human being was controlled by religion. Religion was dominating in the theological stage. Okay, dominance of religion we can say, and belief in religion and supernatural forces. सेंती तमरो मेटाफिजिकल स्टेज रो कोन जेन तमे कहलो फिलोसॉफिकल जेंस ऑपरेटी के फोकस करा गला. या को कहा जाय एब्स्ट्रैक्ट स्टेज बोली, जेंती एटा को फिक्शियस बोली कहा जाय, एटा कहा जाय एब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो इन दिस पीरियड व्हाट हैपेंड, philosophers thinkers ए माने सब आसिले, आ गुटे philosophical way रे सब जिंस को बुझेवा को चेष्टा करले. जेंती के कहा जाय तमरो when you are going to describe beauty of a girl हैला, तो हमें कोन कहू छी, you look as beautiful or your face is as bright as the moon. ओके, ठीक है, मेटाफोरिकल वे रे ठीक है सब जिंस को डिस्क्राइब करबाटा स्टार्ट करले. ओके, फिलोसॉफिकल वे रे वर्षा काहे कि होची, एटा तमे कहि परबो जदि फिलोसॉफिकल वे रे मु ट्राई करिबी दैट द अर्थ इज क्राइंग हैला, सेंती भलिया सब जिंस को एक्सप्लेन करबा टिके फिल्मी फिलोसॉफिकल वे, मेटाफोरिकल वे रे टिके सब जिंस को डिस्क्राइब करले हैला. किछि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रे नाही. ओके, they try to do it in a very
we can say poetic or a literature basis रे जंती तमर शेक्सपियर आ तमर बाकी सब रोबोट फर्स्ट से माने जंती टाइप रो एक्सप्लेनेशन पोएम्स रे तांगर दोतले सेंती काइंड ऑफ you can say. Then last is your scientific stage, or we can say this is called the positive stage. Okay, positive stage or scientific stage रे कोन हला तमरो rational thinking आसिला, rational and logical thinking. Everything that is said or questioned was given, or the reasons are given back by science. La good scientific facts basis re scientific methods और observation use करिकी सबु जिनसर reasoning दिया गला. ओके, अलग अलग थ्योरी बाहर करा गला. तमरो फोर्स काई की तमरो न्यूटन रो थ्री लॉज हला कि तमरो मैग्नेटिक फील्ड काई की एंती होची, तमरो फुल मून टाइम रे तमरो वेव सी रो वेव्स काई की इंक्रीज हो जाउची. आउ तमरो व्हाई द मोस्ट इंपोर्टेंटली why if the earth is flat or if the earth is round, who is the center of the solar system, if it is earth or if it is the sun. आगो believe करा जाउथिला that earth is the center of the solar system. परे परे scientific stage रे तमरो अलगा अलगा scientist मन आसले and Galileo Galilei जानथिबो right, से कहले that no, earth is not the center of the solar system, sun is the center of the solar system. से जिनसो बोली कहले right. तो गोटे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बेसिस रे मेथोडोलॉजी यूज करिकी वेरीफाई करिकी साइंटिफिक बेसिस रे वेरीफाई करिकी सबु जिंसरो रीजनिंग दिया गला. सो वी कैन से रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग. दिस इज हाउ ऑगस्ट काउंट ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. ओके, क्लियर एवरीवन दिस पार्ट? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस. Yes, ma'am. क्लियर? काको कुछ डाउट नहीं तो? No, ma'am. तो एथिरे सबुठु इंपोर्टेंट हला वर्ड कोन? पॉजिटिव हला. पॉजिटिव तमे गुटे देखिथिबो पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव बोली गुटे अछि और पॉजिटिविज्म तमे कहि परिबा. ऑगस्ट काउंट एंड थिंकर्स who supported him, they wanted to establish sociology as a positive science. Okay, तो पॉजिटिव साइंस माने कोन और पॉजिटिविज्म माने कोन कहि परिबो? मो एठी लिखि दोछि. Positivism means emphasis to study society in a scientific way. ओके, से जिनसो को कहा जाए पॉजिटिविज्म और से पर्सपेक्टिव को कहा जाए पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव. तमरो ऑगस्ट काउंट ही वाज ए पॉजिटिविस्ट. ओके, से चाहुथिले सोशियोलॉजी को गुटे पॉजिटिव साइंस हिसाब रे एस्टैब्लिश करबा पे, जेंता कि फिजिक्स रे तमरो न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब करा है कि सब जिनसो को एक्सप्लेन करा होची राइट. तमरो मैथमेटिक्स जेंती तमरो अलगा अलगा थ्योरम सेटा सब दिया हेची, सेंती तमरो सोसाइटी को स्टडी करा हबो से वे रे, सिमिलर वे रे, साइंटिफिक वे रे. ओके, दिस इज व्हाट दे सेड. ओके, तो एठरे मु आउ थरे डेफिनेशन पर्पस आउ एग्जांपल्स नै छी, यू कैन लुक इनटू इट. तो तमरो पर्सपेक्टिव जेहेतु एबे आसला, पर्सपेक्टिव रे दुईटा इंपोर्टेंट जिंस. देयर आर टू important school of thoughts when it comes to understanding what is the subject matter of sociology. Subject matter माने कोन? Sociology as a subject कोन पढिबो तमे, sociology subject पे कोन पढिबो हैला. जेंती मैथमेटिक्स रे कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, न्यूमेरिकल जिंसो, स्टैटिस्टिकल जिंसो, ज्योमेट्रिकल जिंसो पढुचो, सेटा होची सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर मैथमेटिक्स. इकोनॉमिक्स रे जेंती ही गला फाइनेंशियल, मार्केट, ट्रेड, कॉमर्स, सेटा ही जाउची तमरो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. सेंती सोशियोलॉजी रे सब्जेक्ट मैटर कोन?
से जिनसर ऊपर गुटे डिबेट डिस्कशन चलला within the sociological community ହେଲା sociological thinkers तो सेथरे दुईटा डिवीजन हे गले स्कूल ऑफ थॉट बेसिस रे ओके फर्स्ट वन इज योर formalistic school okay formalistic school of thought and another is synthetic school of thought okay formalistic school of thought out हे गला तमरो synthetic school of thought तो ए दुईटा स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली दुईटा सब थिंकर्स को कैटेगराइज कला अबाउट हाउ दे विजन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर्मलिस्टिक स्कूल आउ सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट बुझलो तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट रो फाउंडर हेले जॉर्ज सिमन सिंथेटिक स्कूल रे मल्टीपल अछंती तमरो डरखाइम इमाइल डरखाइम तपरे जिन्सबर्ग बोली जण अछंती ओके दिस आर सम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट ए माने तमरो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कोन कहले दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशियोलॉजी शुड बी very narrow and only focus on studying the forms of social interaction आउ बाकी सब जिनस स्टडी करवाटा इंपोर्टेंट नहीं ओके एटा कहले तमरो फॉर्मलिस्टिक whereas synthetic school of thought कहले नहीं it should have the broader perspective it should the broader हेबा दरकार सब्जेक्ट मैटर आउ सब जिनस पढ़िबा दरकार सब एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी शुड बी फोकस्ड ओके फॉर्मलिस्टिक कहले कि नहीं हमें खाली सोशल इंटरैक्शन केमती होची सोसाइटी रे से एस्पेक्ट को देखिबा बाकी सब जिनस तमरो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हिगला पॉलिटिकल एस्पेक्ट हिगला कि अलगा जहा भी हला सेटा हमें फोकस करबा दिस शुड नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट रे कहले नहीं हमें ब्रॉडर सोसाइटी सब कंपोनेंट को स्टडी करबा ओके आ तमरो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट रे जे माने थिंकर्स थिले से माने कहले दैट सोशियोलॉजी शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज ए प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस ओके साइंस ऊपर से फोकस करथिले साइंस ऑफ द सोसाइटी पॉजिटिविज्म आसिला फिथरेटी हैला साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी हेबा दरकार सेथले कोन हमको हमरो सब्जेक्ट मैटर टा कम दरकार बेसी हमें बेसी सब्जेक्ट मैटर टा नहीं जीवा देन हमको साइंटिफिक वे रे स्टडी करवा लागि असुविधा हो दिस इज व्हाट फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट द थिंकर्स वर आर्ग्यूइंग ओके तारो contrary रे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट दे think that every component of the society should be studied in a very inclusive way okay सब जिनस पढ़िबा दरकार and it should also be interdisciplinary okay it is okay to interlink between another subject जेंति कि तमरो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से तारो से सब्जेक्ट को कहा जाए तारो इंटरलिंक को कहा जाए सोशल साइकोलॉजी एंती सोशियो इकोनॉमिक्स राइट हिस्ट्री आउ सोसाइटी को भी हमें लिंक करि परिबा तो इंटरडिसिप्लिनरी हेले भी चलुची एथिरे कोन हबो हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करि परिबा ऑफ द सोसाइटी ओके आउ माने कोन कहले गिव मी अ मिनट
Okay, sorry. So I was saying formalistic school रे formalistic school रे तांकर content से माने कोन नेले content रे रखले as I said to understand forms of social interaction सेथिरे से माने competition हला तापरे तमरो cooperation conflict ए सब जिंस को से माने कहले हमें स्टडी करबा Similarly, tomorrow, synthetic school of thought, tankara se mane kono kaile that we should have a content-based analysis of the society. Content-based mane they want to study the values, norms, then various social institutions. Okay, even social interaction bhi hala, stratification. Sabu jinso se mane study karibe. Okay, so in conclusion, what you saw, the one belonging to the formalistic school of thought, they said that we should establish your sociology as a science. Okay, and the subject matter should be very narrow, should be very small, and everything should be studied in a very scientific way. But on the contrary, synthetic school of thought रे जे माने थिले से माने कहले नै हम सब्जेक्ट मैटर टा ब्रॉड हबा दरकार सोसाइटी रो सब कंपोनेंट को हम स्टडी करबा आ गुटे इंक्लूसिव वे रे सोशियोलॉजी को हम एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करबा ओके आउ एग्जांपल्स Ma'am? हम थिंकर्स यस Last point out there explain करिए please. प्रोडक्ट फॉर्मलिस्टिक का कंटेंट आगे मैम. अच्छा कंटेंट रे देखो कंटेंट रे माने सब्जेक्ट रे तमरो कोन कंटेंट्स रहइबो जेंति कि सब्जेक्ट मैटर मु कहली फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट रे कहउचंती दैट फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन को स्टडी करबा तो फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन रे तमरो पळे आसीबो कंपटीशन कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हला तापर सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन एडा कोन ई वे रे हम गुटे इंटरैक्ट करूचंती दुईटा इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स राइट तो से इंटरैक्शन को ही हमरो कंटेंट बनेबा हमर सब्जेक्ट रो कंटेंट दिस is going to be the content of our subject whereas your synthetic school of thought se mane tangor content ku kono rakhile ame study kariba values ku norms ku culture ku amaro society ro social institutions ku study kariba social interaction ku bi study kariba stratification kenti hochi society ro sabu jinso study kariba every aspect of the society should be covered in the subject matter of sociology this is what they said clear bujhiyala Yes ma'am. माने जंती सेम माने खाली कोन सोशल इंटरैक्शन खाली एतकी ही पढिबा सोशियोलॉजी रे ता छडा किछि पढिबानी बट सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट रे कोन सबु जिंस पढिबा जहा जहा होची सोसाइटी सब एवरीथिंग शुड बी कवर्ड दिस इज व्हाट दे सेड ओके क्लियर मैम ये जो डेटा स्कूल ऑफ थॉट अछि से एका संगे एवर्ट हेतला ना अलगा अलगा टाइम पीरियड रे नहीं देखो एबे तमरो मल्टीपल थिंकर्स आसिले ना बहुत गुडा थिंकर्स डरखाइम तबर मुइटिनेली गिन्सबर्ग जॉर्ज सिमेल ऑगस्ट कॉम्ट बहुत थिंकर्स आसिले आउ समस्तंकर विजन अबाउट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वाज डिफरेंट हला तो समस्त सब थिंकर्स को दुईटा कैटेगरी रे कैटेगराइज कर दिया गला जे माने सोशियोलॉजी को गुटे पॉजिटिव साइंस हिसाब रे एस्टैब्लिश कर देबा को चाहउतले से मन फॉर्मलिस्टिक बेली कैटेगराइज करा गला जे माने सोशियोलॉजी को गुटे इंक्लूसिव सब्जेक्ट हिसाब रे एस्टैब्लिश करबा को जानतले तांको साइंटिफिक वाली कैटेगराइज कर दिया वाला दिस इज बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ द थिंकर्स ला यस तो एंति माने किछि उडे फॉर्मली या फिर थ्योरेटिकली ताको एस्टैब्लिश करा नहीं सेटा को कैटेगराइज कराय छै थिंकर्स वन दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड कर दिया जाय छै जे माने फॉर्मलिस्टिक स्कूल रो सपोर्टर तांको से कैटेगरी रखाला और जे सोसाइटी को ब्रॉडर वे स्टडी करबा को चाहतले से सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट रो कैटेगरी रे रखा गला ओके तो तमरो इमाइल डॉकहाइम हेले गिन्सबर्ग हेले तापर तम पढिबो मैक्स वेबर विषय रे माने सब आसीबे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट रे तापर जॉर्ज सिमेल ऑगस्ट कॉम्ट ऑगस्ट तापर बियर कांत बोली गुटे अछंती तमे याको विषय तो पढिबनी बट मन रखियो से फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट रो बिलोंग करती ओके दिस इज द एग्जांपल ऑफ द थिंकर्स क्लियर formalistic school and your scientific synthetic school yes ma'am
काउ किसी डाउट नहीं तो नो मोर No, डाउट्स ma'am. ओके क्लियर No, ma'am. तो नाउ कमिंग टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द सोशियोलॉजी हला तमे ऑगस्ट कम विषय रे देखिलो तापरे एई तीन जन को किए इमाइल डर्कहाइम कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर तांको कहा जाए ट्रिनिटी ऑफ सोशियोलॉजी हला कार्ल मार्क्स इमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर जेंति कि हम हिंदुइज्म रे तमरो विष्णु महेश्वर एंड ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर these are known as the trinity right सेमती तमरो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रे these are called as trinity तमे तमरो सिलेबस रे ऑगस्ट कम विषय रे बेसी किछि नाही just need to know the law of three stages that they have given that he has given and से फाउंडिंग फादर थिले बोले एतकी जानवा दरकार तमर कार्ल मार्क्स इमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर तांको विषय रे डीपली तमे पढिबो इन योर थिंकर्स पार्ट ओके माने बहुत इंपोर्टेंट these are the very important तांको थिंकर तांको थ्योरीज माने भल से माने रखिबो दरकार so these are the founding fathers of sociology तमरो कार्ल मार्क्स देथिले तांकर कांसेप्ट को कहा जाय मार्क्सिज्म विषय रे और जे तांकर कांसेप्ट्स और तांकर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे तांको मार्क्सिस्ट बोली कहा जाय से कैपिटलिज्म मोस्टली कैपिटलिज्म विषय रे तांकर सब थ्योरी से अराउंड ही एक्सप्लोर करू छी हला और क्लास स्ट्रगल इन द सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी ओके और टिके इकोनॉमी और सोसाइटी को इंटरलिंक करिके से तांकर थ्योरीज गुडा को देचंती ओके कार्ल मार्क्स डर्कहाइम तमरो फंक्शनलिस्ट बोली कहा जाउची आई विल टेल अबाउट व्हाट इज फंक्शनलिज्म व्हाट इज योर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या विषय में डिस्कशन करबा तो से देथिला तमरो थ्योरी ऑफ सुसाइड वेरी फेमस वेरी इंपोर्टेंट थ्योरी से बहुत रिकॉग्निशन पाइथिले तांकर थ्योरी पाइ तापरे से डिवीजन ऑफ लेबर विषय रे कहिथिले इन सोसाइटी ओके आउ से सोसाइटी को कहिथिले एज Solidarity. यस No, social solidarity. हां सोशल सॉलिडारिटी सोसाइटी रे सॉलिडारिटी रहबाटा बहुत इंपोर्टेंट नले सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हि जिवो बोली से कहिथिले ओके सेडा माने हम सब पढिबा डिप्ली आई एम नॉट गोइंग देयर बट से गुडा गुडा टर्म कहिथिले दैट सोसाइटी इज सुई जेनेरिस तो सुई जेनेरिस माने कोन बुझुचो सोसाइटी इज सुई जेनेरिस सुनी चो के भागरो टर्म का No, no. नहीं फिर सुने लो so functionalist and as Durkheim जे माने functionalist perspective to belong करंती ଆଉ Durkheim they mostly focus on society they say that society is important and individuals are passive beings तांकर बेसी किछि रोल नै सोसाइटी रे जहा होछि से माने सोसाइटी अकॉर्डिंग सब जिंस करबा दरकार तो sui generis माने कोन that society is sui generis means society is one of a kind okay and the individual may cease to exist but society will always be there okay meaning आमे आजि अछु काली आमे नथिबो गुड अलगा जनरेशन आसीबो आम पूर्वरु गुड अलगा जनरेशन थिला okay individuals or the members of the society will keep coming and going but society will always be there society सब बेले रहिबो okay so society is sui generis society निजे निजको करेक्ट करबो किछि भी सोसाइटी रे प्रॉब्लम होची जेंति कि किछि क्राइम हे गला लॉ एंड ऑर्डर इशू हैला सब जिंस इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी दिस इज व्हाट फंक्शनलिस्ट यूज टू से फंक्शनल फॉर द सोसाइटी माने से माने सोसाइटी रो सब जिंस को पॉजिटिव वे रे देखुतिले सोसाइटी रे किछि भल हैला जदी then it is also positive economic development होची भल हैला सोसाइटी रे क्राइम होची ताहले भी भल why जदी क्राइम हेबो माने सोसाइटी कोन करबो निजको रिफ्लेक्ट करबो लॉ एंड ऑर्डर रे चेंजेस आनिले कोन हेबो सोसाइटी रे स्टेबिलिटी हेबो सोशल सॉलिडारिटी इंक्रीज हेबो
This is what they used to say. Okay, तो एटा आइगला माइल्ड अर्काइन रो कांसेप्ट. मैक्स वेबर कहिथिले ब्यूरोक्रेसी विषय रे हला, which is very relatable to you. ब्यूरोक्रेसी तापरे से तांकर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म गोटे बुक ते देथिले हला. तापरे तमे अलगा अलगा से बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज गुडा को देथिले, तमे सेटा भी पढिबो हला. So these are the founding fathers of sociology. तांको थ्योरी विषय में जीवानी, because we have to study this in depth in the classes ahead. Okay, scope of sociology we have already discussed. तो मु briefly टिके तुमको नहीं जाऊँगी about how society has evolved and why sociology as a subject emerged. हला, society को तुम्हें categorize करी पारिबो evolution of society, especially western perspective रे. First माने पहले आसिला dark ages. हला, dark ages पर आसिला enlightenment period. या फिर ताको कहा गला रेनेसां पीरियड बोली कहा गला. तापरे आसिला तमरो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तापरे आसिला कमर्शियल रेवोल्यूशन, तापरे आसिला साइंटिफिक रेवोल्यूशन नो सोसाइटी. डार्क एजेस ला बिफोर 13th century ए पीरियड को डार्क एजेस बोली कहा जाता. Why? Because at this period there was dominance of church. Church here signifies a religion. Okay, so there was dominance of religion. जहाँ तमरो राजा कहूतिले किंबा जहाँ भी तमरो religion कहूतिला, it was considered as sacrosanct. Sacrosanct माने पत्थर की लकीर से माने जहाँ कहले सेटा ठीक. ई पीरियड कंसीडर करा जाउतिला that the king, okay, king has the divine rights to rule over the people. Okay, the kings are the descendants of the god and it is their rights, it is their divine rights to rule over the people, and whatever the king is saying, it is absolutely correct. Okay, तो से टाइम रे देखो जहाँ रिलीजन कहूतिला ताको किए क्वेश्चन करनथिले. If the religion will say the earth is flat, it is flat. If the king will say the earth is flat, it is flat. If you want to question them, then you will be exempted then and there. Right? से टाइम रे एंती थिला ना तमरो फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम रे गिलोटिन बॉलीवुड रे सुनथिबो, सुनिचो कि नहीं गिलोटिन विषय रे? Yes or no? तमरो ଗୋଟେ machine टे थिला जाकू एक्सिक्यूट करा हबा थिबा ता मुंडो को से मशीन भितर पुरे देबे, दुटा ब्लेड एंती रखाइतवा अपसाइड डाउन, से ब्लेड ता खसी गले यू विल बी beheaded. सेटा को गिलोटिन बोली कहा जाय. इफ यू डोंट नो देन तमे सर्च कर देबो ता विषय टिके जाई हला. तो जदी किंग काहा को कहबे दैट दिस पर्सन इज accused of anything, so then and there they can be exempted or then and there they can be executed. तांको मार दिया जिवो कि प्रिजन रे रखि दिया जिवो के कहा किंग आउ रिलीजन को क्वेश्चन करि पार नथिले. तो सब बेले कोन पीपल वर लिविंग इन अ फियर, सब बेले डरी डरी रहउथिले हमें किछि उडे भूल कर देला कि किछि उडे हमें मिस्टेक कर देला, दैट we have threat to our life. Okay, सेति लगी पीरियड को कहा वाला डार्क एजेस बोली. तापरे आसला तमरो एनलाइटमेंट पीरियड. एनलाइटमेंट पीरियड को रेनेसां पीरियड बोली कहा जाय. एई टाइम रे कोन हला अलगा अलगा इंटेलेक्चुअल्स, okay, intellectuals, तापरे philosophers, तापरे तमरो साइंटिस्ट, ए माने सब इमर्ज हले हला, जे माने टिके एजुकेटेड थिले and they started to question various aspects and various wrong practices in the society. Okay, तमरो लियोनार्डो दा विंची, तापरे तमरो गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, these people belong to this Renaissance period. And the people who are who have a ability to think very far ahead from their time is known as Renaissance man. जेंति मु कहली तमरो लियोनार्डो दा विंची तांको कहा जाउतला रेनेसां मैन बोली, काहेकि से तांको टाइम रे बहुत आगो को तांकर विजन थिला, बहुत आगो से चिंता करि पारथिले.
बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही क्रिएटिव माइंड थिला तांकर राइट सेंते तमे कहि परबो इंडिया रो रेनेसां मैन काहा को कहा जाय Raja Rammohn Roy. राजा राम मोहन राय एब्सोल्युटली ओके तो एनलाइटमेंट पीरियड रे कोन हला एंती फिलोसोफर्स थिंकर्स इंटेलेक्चुअल्स माने सब आसिले आ से माने क्वेश्चन करवाटा स्टार्ट कले अलग अलग थ्योरी देवाटा स्टार्ट कले ओके इन्वेंशंस गुडा को हेबाटा स्टार्ट हला डिस्कवरीज हेबा को स्टार्ट हला सब टू इंपोर्टेंट इन्वेंशंस इज द इन्वेंशन ऑफ स्पाइनिंग जेनी and steam engine which gave boost to what industrial revolution ना तो आगो कोन थिला प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड होतिला डोमेस्टिक लेवल रो प्रोडक्शन होतिला आगो जेतकी दरकार सेतकी प्रोड्यूस करूथिले आ निज निज भितरे डिस्ट्रीब्यूट करिके तांगर हि जतिला एंती कमर्शियल मार्केट सिस्टम एते डेवलप नथिला राइट बट जेंती जेंती पॉपुलेशन इंक्रीज हला demand increase hala okay when the population increase earlier it was domestic level of production tame jaha bhi jo konosi essential commodity jaha bhi gala bread hala food jo konosi food hi gala ki tamara clothes hi gala jaha bhi essential commodities agada domestic level of production hotila okay tame jenti jenti tamara population ta increase hala tamara demand bhi increase hala ei sobu jinso tame economics रे पढिथिबो okay demands increase hala को कोन हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करबा को पड़ला ओके प्रोडक्शन इंक्रीज करबा पई तमरो स्टीम इंजन ए सब आ स्पाइनिंग जेनी यूज करिके आ अलगा अलगा मशीनरीज यूज करिके कोन हला फैक्ट्री सेटअप करा गला फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री सेटअप करा गला फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जेंती सेटअप हला तो प्रोडक्शन इंक्रीज हे गला राइट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही परिला ड्यू टू दैट लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज पॉसिबल राइट तो जंती जंती लार्ज स्केल प्रोडक्शन हला तमरो सप्लाई भी इंक्रीज हला राइट तापरे से फर्दर से प्रोडक्शन को मीट करबा पई अलगा अलगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हला इंडस्ट्रियल एरियाज हले इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट हला नाउ इंडस्ट्रियल एरियाज जंती डेवलप हला इट रिक्वायर्ड लेबर इंडस्ट्रीज रे काम करबा पई लेबर दरकार पड़ला लेबर माने कोठो आउसिले तमरो रूरल एरियाज रो विलेज एरियाज रो इंडस्ट्रियल एरियाज को सब माइग्रेट करके जाउतिले इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट हला तो जेतळे से माइग्रेशन ता बेसी ही की सेटलमेंट्स इंक्रीज अबाटा स्टार्ट हला इट लेड टू अर्बनाइजेशन so we can see how the society changed over the period of time from dark ages where everything was controlled by religion to people questioning every wrongdoing in the society, giving new theories, giving or making new inventions, which gave boost to your industrial revolution. तापरे तमरो जेतु इंडस्ट्रियल इटा इंक्रीज हला प्रोडक्शन इंक्रीज हला कोन तमरो कमर्शियल सेक्टर रे भी ग्रोथ हला ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिलला कमर्शियल रेवोल्यूशन आसिला आउ कमर्शियल रेवोल्यूशन जेतरा आसिला सोसाइटी रे पैसा जेंती आसिला फाइनेंस सरप्लस एंड फाइनेंस सरप्लस फाइनेंस इन द सेंस मनी ए सब जिंस जेतरे सोसाइटी रे इंट्रोड्यूस हे गला तो कोन हमें टिके फोकस करू towards more scientific developments okay which led to scientific revolution in the society domestic level रे surplus रो concept नथिला जितकी दरकार सेतकी प्रोडक्शन है कि that's it but when industrial revolution came industrialization जेतळे हला surplus रो concept असला large scale production थ्रू right तापरे तमरो अलग अलग सेक्टर धीरे धीरे बूस्ट हला सोसाइटी डेवलप हला urbanization हला our urbanization through बहुत changes हला तमे सेटा देखिबो how individualism is in rise even in today's urban society yes or no religious matters रे टिके कि religion रो influence टिके society रो कमी गला family रो influence कमी गला we became more individualistic right how with urbanization new problems of slums poverty then in present era digital divide हला से सब जिनसो अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आसिला सो ड्यू टू दिस फैक्टर्स ए सब जो तमरो हाउ सोसाइटी इवॉल्व से सब चेंजेस को देखले आ थिंकर्स चिंता करले कि अच्छा एमती चेंजेस हे कि आसी छी आगो को भी बहुत चेंजेस हबो
which is why we need to study society. If we are able to study society, ame changes ko bujhi parila, then we can formulate better schemes, better policies, or we can be better prepared for what coming next for us, right? So this is why sociology as a discipline was visioned to be established. सेथिलागी सोशियोलॉजी गोटे डिसिप्लिन हिसाब रे एस्टैब्लिश करबा पई चिंता कले, बुझिला? क्लियर अबाउट डार्क एजेस, एनलाइटमेंट पीरियड, या विषय रे ना म तमरो एटी नोट्स रे दे देछि हला, तुमको शेयर कर देबी, थरे देखि देबो. एवरीथिंग आई हैव गिवन हियर हला. फ्यूडलिज्म कोन, एटा सब रेनेसां पीरियड, एनलाइटमेंट पीरियड हला, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, आउ तमरो इम्पैक्ट कोन थिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रो. एवरीथिंग आई हैव गिवन हियर. आई जस्ट गिव यू ओवरव्यू राइट नाउ because you are going to study everything about this in depth, so we're not going to waste time. Okay, clear is a part. Any doubts kaku? Feudalism विषय रे जानि तो कि should I explain? मैम से जो डार्क एजेस रे गोटे पॉइंट सैक्रोसेंट बोली सी पॉइंट आउट रे बुझी देबी. अच्छा, सैक्रोसेंट होची पत्थर की लकीर बोले ना, मींस डार्क एजेस रे कोन थिला कि whatever the religion or the king is saying, it is absolutely correct. से माने जहा कहले सेटा ठीक, you cannot question them हला. जंती मो एग्जांपल देली that if the earth is flat, you cannot question कि नहीं नहीं आप तो बोल, सेमती कोई परिबोनी. से माने जदी कहू चंदे then that is correct. Okay, that means whatever they are saying, it is absolutely correct, it is sacrosanct, you cannot question them, बुझलो? Okay. Yeah. तो 5th to 13th century को dark ages वाली कहा जाए. तमरो kings had the divine rights to rule, as I said. Okay, and churches used to control the entire monarchy. Okay, and used to serve as the interfering power between the people and the lords or the kings, बुझलो? So whatever they are saying, it is absolutely correct. And at that period, that there was arbitrary rule of the king. माने जे भी किंग थिबो से तारो मन इच्छा करिवो. एबे काकू मार देबी बोले मार दी पारिबो. ओके, काकू मु बहुत 2 एकड़ लैंड दे देबी, 100 एकड़ लैंड दे देबी, माने सेटा भी करि पारिबो. Whatever the king wants, he can do that. Okay, arbitrary rule. तो तारो मन इच्छा against the will of the people or the citizens. So this is dark ages. Enlightenment period तो तुमको मैं explain कर देली. Okay, तापरे commercial revolution, scientific revolution, ये टाइम में तो mathematicians और तापरे physicist, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Newton, माने टाइम रो सब लोग हला. Darwin, Charles Darwin, Herbert Spencer. Herbert Spencer was the first person who said about the statement or the line survival of the fittest. Herbert Spencer କହିଥିଲେ ना, survival of the fittest बोली. Okay, सब कंफ्यूज माने मोस्टली कंफ्यूज जे जंती कि डार्विन କହିଥିଲେ, चार्ल्स डार्विन କହିଥିଲେ ना हर्बर्ट स्पेंसर said that survival of the fittest. Okay, सेट्रू इंस्पायर कि डार्विन तांकर थ्योरी देथिले, बुझिलो? क्लियर? Yes, ma'am. Okay, feudalism तुमको explain करिबा दरकार कि if you want I can explain you, but it is very simple concept, which is why I am not taking a lot of time, because feudalism माने कोन सेडा तमरो वर्ड feud means land. Okay, feudalism रे थिला the concept of land ownership. So basically कोन होतला, all the land in a society or a territory was controlled by the king. King रो जितकी भी subordinates थिले, तमरो nobles हिगले, knights, vassal, nobles रे तमरो aristocratic people, courtmen सब आसीबे हला, ministers माने king रो ministers से माने सब nobles रे आसीबे, knights and vassals रे army general ले माने सब आसीबे हला, आवा army personals हला. तो king ए land रे सब land को control करूथला से as a gift हला कि for whatever purpose it is, as a reward हला के land को दे दोथला तमरो कागु, nobles को केते portion of land, knights को केते portion of land और निजे केते portion रखुथिले हला.
आउ से लैंड रे के काम करथिला peasants and other landless laborers in exchange of food and protection. So this is what your feudalism means. So ownership of land was controlled by king. आउ जे माने लैंड रखुथिले लार्ज लैंड ओनर्स को लैंड लॉर्ड्स बोली कहा जाउथिला. Mostly your nobles and knights and vassals were the landlords. Peasants were working in this land in exchange of food and protection. Look, it pyramid रे एकदम clearly दे देछि. This is feudalism is what I summarized for you. Clear? बुझिलो? Clear everyone? Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Move in जहाँ भी मैं explain करूँ right? In depth I have given here. मैं लिखी देछि सब. केतेटा मु निजे लिखी देछि और केतेटा मु प्रिंट टाइप करके दे देछि. Figures आउ तमरो graphs आउ तमरो pyramids ए सब pictorial form रे दे देछि हला. किंतु तुमको confusion हेबनी. Okay? So now let's proceed, move towards some of important terminologies. Okay? केतेटा important terms देखिबा. हमें first देखला about what is society, what is sociology. हला एटा दुटा important थिला. एबे हम अन्य terms गुडा को देखिबा. Okay? जेंति मु को गुडा कहली social stratification. Social stratification माने के जानि छु? Would someone like to say what is social stratification? Ma'am, division. Division. On what basis? On the basis of class. Okay. Out. Social stratification. Stratification माने कोन? Stratify करिबाटा. Divide करिबाटा. In various strata. Strata, right? Strata माने बुझ्छो तो? So it is a ranking of individuals and also groups, group of people based on various factors like your gender, then your And socioeconomic status. race. Yes, socioeconomic status. Status तमरा आसी जिबो class रे पड़ा आसी होला. Gender, race, class. हमरो इंडिया को यूनिक हिच तमरो के caste stratification करबा. So this is what social stratification is. तापर मु कहली theoretical perspective मु जंती तमरो last class रे भी teachers माने कहथिले right about functionalism तापर तमरो symbolic interactionism. तो एटा टिके important है तुमको बुझवाटा. बहुत theoretical perspective अछि. एबे जे जहा को बिलीव कला जो थिंकर जहा को बिलीव कला से तांको से जगह रे कैटेगराइज कर दिया जाय छै. जेंति हमें स्कूल ऑफ थॉट देखला फॉर्मलिस्टिक सिंथेटिक्स सेंति एटा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव. एठरे तमरो आसी जबो आमो पई हमरो सिलेबस पई इंपोर्टेंट जहा भी सेतकी हम कवर करबा. फंक्शनलिज्म, तापरे तमरो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ना, symbolic interactionism, okay, तापरे feminist theory और लास्ट रहेगा ना पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना. पोस्ट मॉडर्निज्म गॉट इट. फंक्शनलिज्म जंती कहली फंक्शनलिज्म में तुम्हारे माइल्ड और खानी सब आछंती. फंक्शनलिज्म it views society as a system of interconnected parts working together.
Okay, it views society as a system of interconnected parts working together. जेमती कि अमर अमे ह्यूमन बॉडी को देखिबा ह्यूमन बॉडी रे कोन देयर आर सेल then those cell together forms tissues, those tissues together form your organs, those organs together forms a organ system. So organ system ro alga alga organs ochanti jenti ki tamara eyes ala skins ala your ears, right? tamara alga alga glands ochanti. So in a organ system or in a human body there are different parts and all the parts are interconnected. Your heart, brain, your limbs, your muscles, everything is interconnected. If there is a problem in one single part of the human body, then it causes problem to the entire body or not. Sinti functionalist society ko view karanti. Okay, that society re sabu jinsa interconnected. Gutte part re jodi kichhi asubidha hochi, then pura whole society ko seta problem create karibo. ଆଉ ସେମାନେ mostly society को ही focus दियंती. Everything in the society is functional, whether it is good or whether it is bad. Okay, this is what they say. Clear? This is functionalism. अच्छा सेटा फॉर्मेट ही गला केंती एटा जहा लिखितली. अच्छा मु लिखि देबी हला. I don't know what happened. सेटा रिफ्रेश की फॉर्मेट ही गला जगाटा. Functionalism बुझिला तो everyone? Yes. फॉर्मेट ही गला केंती मु बुझनी रिफ्रेश की, but nonetheless मु लिखि देबी हला. भल से लिखि देथिबी for your reference. तापर हमें देखिबा conflict theory. Okay, conflict theory रे तमर कार्ल मार्क्स जेंती हो गले से माने conflict theory रे कोन तमर फोकस करा जाय, फोकस ऑन पावर, तापर inequality, तापर तमर social conflict ऊपर फोकस करा जाउची. ओके, से एस्पेक्ट को जे स्टडी करछन्ते तांगर थ्योरीज रे तांको कहा जाय conflict theorist. ओके, तापर symbolic interactionism और symbolic interactionist theory से माने emphasize करूचंती on meanings and symbols. Okay, meaning and symbols in social interaction. जेंते मु कहिथिली तुमको GH Mead रो looking glass self हला आमे समस्तंकु हमर गुटे पर्सनल गुटे स्पेस रे आमे गुटे अलगा बिहेव करूछु आ गुटे हमर सोशल स्पेस रे अलगा बिहेव करूछु, राइट? आ हमर तम गुटे देखिबा लेवलिंग थ्योरी बोली गुटे अछि. हाउ वी लेवल पीपल माने केंती पीपल को लेवल करा होची, कैटेगराइज कर दोछु यूजिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. एबे जे टैटू एटू करी थिबो, बाळ बेसी लंबा लंबा करी थिबो, ओके, आउ सेंती पियर्सिंग सब करी थिबो, we mostly perceive that this person is not trustable. से गोटे गैंगस्टर टाइप रो लोक होइथिबो बोली, राइट? एंती हमर धारणा रहइबो कि नै? मोस्टली हम चिंता करू, बट chances are there that he might be a singer, he might be a good person, he might not be a gangster. So this is known as leveling theory. Okay, एबे जेंती तमे देखिबो काहाकू गुडे लक्ष्मीकांत धरी की बुलुथबो सब बेले, एनी टाइम न्यूज़पेपर रे बसिथबो, दिन को 6-7 घंटा से पढुथबो, तो हम कोन लेवलिंग करबो दैट अच्छा हातरे लक्ष्मीकांत अछि आ बसी की न्यूज़पेपर एतकी डेडिकेटेडली गुडे यंग छुआ पढुची, देन he or she might be a civil services aspirant or a OPSC aspirant or a UPSC aspirant. So this is leveling theory. So एटा को हम symbolic interactionism रे consider करिबा ए theory ए perspective को, बुझिला? Yes, ma'am. लेवलिंग थ्योरी तो तमरा नाही, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी. यू कैन मु तुमको शॉर्ट रे कहि देली हला. तापरे फेमिनिस्ट थ्योरी कोन तमर जेंडर इनइक्वालिटी ऊपर फोकस करिवो. तापरे जेंडर रिलेटेड जहां भी इश्यूज होची, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, जेंडर बेसिस रे जहां डिवीजन होची, तो जेंडर पर्सपेक्टिव रे जे फोकस करूची that they comes under feminist category. Of feminism को जे फोकस करूची.
फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट रो आइडियोलॉजी को फोकस करिकि जे माने तांको थ्योरी दिया हेची दे कम अंडर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. ओके, लास्ट वन इज द पोस्ट मॉडर्न. पोस्ट मॉडर्निज्म आसबो तमरो से माने जे तमरो जहाँ भी they basically question universal truth and emphasize on diversity of experiences. जेंति कि तमरो किछि भी एबे जो थ्योरी हेछि ताकु गुटे मॉडर्न वे रे से माने नेकी गुटे तांकर एनालिसिस करिवे. ओके, जेंति कि आजि काली रो तमरो मॉडर्नाइजेशन हला तापर ग्लोबलाइजेशन हला. ओके, तो से सब मॉडर्न फेनोमेना को नेकी से तांकर थ्योरीज ऑफ पर्सपेक्टिव देबे. दैट इज नोन एज पोस्ट मॉडर्निस्ट. ओके, क्लियर? द 5 पर्सपेक्टिव तमरो एटा रिफ्रेश कि से फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ता फॉर्मेट ही वाला, बट आई विल इंक्लूड इन डिटेल्स अबाउट ऑल द 5 पर्सपेक्टिव. क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो पर्सपेक्टिव देखिलो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कोन देखिलो, तापरे आउ कोन अछि एटी तमरो थिंकर्स माने मु दे देछि अबाउट थिंकर्स ब्रीफली हला. इंपोर्टेंट थिंकर्स जेति ऑगस्ट कॉम, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स तांको विषय टिके ब्रीफली दे देछि जस्ट फॉर यू टू गेट अ ओवरव्यू अबाउट देम हला. तापरे आउ गुड इंपोर्टेंट टर्म होछि सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी माने कोन? सोशल मोबिलिटी माने कोन? Give me a minute, I have to take a call. Okay, meanwhile you just
Hello. Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. Sir, what the host is doing? No problem. Let me continue. Sorry for the disturbance. ଟିକେ Wi-Fi रे ଟିକେ issues ହେଇଯାଇଥିଲା। अच्छा, तो कह social mobility. Social mobility माने कौन? It is movement of people. Movement of again individual IND लिखुचे ना individual or group of people from one strata or from one social hierarchy. Not visible. Screen visible होगी. Invisible only. Wait a minute. Ebela? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it is the movement of people from people or individual from one social strata or social hierarchy to another. Hello. Ebe tomar social mobility tomara deeply पढ़िबो but mo तुमको कह दूची are of two types. Okay. First is vertical social mobility. Another is horizontal social mobility. Okay. केतना types रो अछि दुटा types vertical social mobility and horizontal social mobility. Vertical is again of two types, upward and downward. Okay. Upward social mobility माने कोन एबे गोटे रिक्शा पुलर रो पिला से आईएएस ऑफिसर ही गला तो सेतरे कोन तांगर स्टेटस इंप्रूव होची से माने गोटे सोशल हायरार्की रो आउट सोशल हायरार्की बोले तांगर क्लास इंप्रूव हला राइट सो दे मूव अप इन द लैडर राइट सो सेरा को हमें कहा जाबा अपवर्ड सोशल मोबिलिटी डाउनवर्ड रे एबे गोटे बिजनेसमैन तारो पिला कोन हबो से स्कूल ड्रॉप आउट नै जिवो ड्रगिस्ट हे जिवो बापार बिजनेस को से बैंक्रप्सी रे करे देबो तो सेरा कोन आइगला डाउनवर्ड मोबिलिटी right from it is a fall from one and from upper class to lower class so regular downward mobility horizontal mobility re kono there will be no change in the status okay jenti ki ebe gote school ro teacher hele for example central school kv kendra vidyalaya setire every 3 years tomar teachers ro transfer हुए 2 to 3 years हला से एबे जदी आजी गुटे केवी भुवनेश्वर तांकर ट्रांसफर गला केवी लखनऊ हला तो से कोन से जदी थिबे पीजीटी फिजिक्स से पीजीटी फिजिक्स है कि केवी भुवनेश्वर रे थिले अब पीजीटी फिजिक्स है कि से केवी लखनऊ को गले तो तांकर किछि स्टेटस रे चेंज हला कि खाली लोकेशन रे चेंज हो गला राइट सो नो चेंज इन द स्टेटस सो सेटा को कहा जाय हॉरिजॉन्टल वे रे गला देयर इज नो चेंजेस एटा ही गला कोन upward एटी downward in the ladder मुझे हला social mobility Yes, ma'am. okay social mobility विषय रे तुमे पढिबा आपको then आउ कोन अछि important terms तमरो अच्छा downward mobility रो मने पड़ला गोटे पढिबा तुमे deviance conformity और deviance विषय रे रोबोट के मॉर्टन रो थ्योरी रे पढिबो हला तो deviance माने कोन does anyone know any idea Ma'am, behavior that violates norms. yes absolutely behavior that violates social norms okay behavior that society does not accept
unacceptable behavior. Okay, सेड़ा कोन को आजे deviance बोली. तो deviance रो की example दे परिवो. Someone would like to give an example of deviance? Intercaste marriage. Intercaste marriage. Hala. Intercaste marriage is something that Indian society, most of the part of India does not approve of. सेड़ा कोन को आजिबा deviance बोली को आजिबा. Right? Jodi ki intercaste marriage करूची, then society will consider you as a deviant. ऐसे behavior को आजिबा deviant behavior. तुमको society deviant बोली consider करेगी. Now, a thing that you need to remember, that a behavior that is considered as deviant in one society might not be considered as deviant in another society. गोटे सोसाइटी रे जो गोटे बिहेवियर को किछ प्रैक्टिस को डेविएंट कंसीडर करा जाय छी से अलगा सोसाइटी रे मे बी ताको डेविएंट कंसीडर करा न जिवो. जेंति के एग्जांपल अल्कोहलिज्म हला. अल्कोहलिक्स की जे माने अल्कोहल कंज्यूम करूचंती इंडिया रे हमें टिके तांकू डाउनग्रेड वेरे देखुछु. राइट, हमें टिके पसंद करूनु कि ओडा अल्कोहल हबो, ये अल्कोहल कंज्यूम करूछु अल्कोहलिक पीपल. राइट, but when you go to Western countries or when you go to East Asian countries, alcohol is part of their celebration. Okay, कि alcohol consume करतुवा ताकू अंती खराब हिसाब रे देखा जाएनी. Right, so the people who are consuming alcohol in India may be considered as deviant, but the people who are consuming alcohol in countries outside, जंदी कोइली Japan हे गला, China हे गला, कि तमरो यूरोप हे गला, it is part of their celebration. So that is not deviant for them. So what is deviant in one society might not be deviant in another society. Clear? Then a deviance को deviance और जहाँ भी problems को society कौन करे try to regulate it. Okay, that related term होची तमरो social control. Social control माने कौन? It is the mechanism, okay, or the norms, rules and regulations through which society regulate the members, okay, regulate the behavior and we can say maintain social order. So जहाँ भी rules and regulation हला, norms हला, practices हला, through which the society is regulating the behavior of the individuals or the member of the society and is establishing a social order is known as social control. कितना social control raw mechanism या फिर rules and regulations are written and some we learn it through the process of socialization. Now another word, socialization. Written regency tomorrow constitution, Indian penal code, rules and regulation are written. केतरा मु जंती कहले तमे socialization process थ्रू सिखिबो. जंती की बड़ा लोगों को जवाब दिया हुए नहीं. You have to touch the feet of your elders. When you are entering inside the temple, you should keep your shoes outside. Right? तो एडा सब केतरा rules and regulation हला. Right? तो सेडा हमें किमती सिखिलो. जोड़ा लिखा ही नहीं. We learn it from socialization. Socialization माने कौन? Socialization is very important. It transmits the values, norms, culture of a society from one generation to another. Right? So socialization माने कौन? Ma'am, socialization is a process that through which individuals learn and internalize the values, beliefs, and norms, Practices and every their aspect culture. of the society they come from. Right? It is a process through which a person or an individual learns, learn and just not only learn but also internalize, apply it. Okay, very well said. Internalize all the norms, culture, values, beliefs, everything from the society he or she is coming from. So socialization no ketara agent rochanti. Primary
एजेंट एंड सेकेंडरी प्राइमरी रे तमरो की आसी जीवो फैमिली सेकेंडरी रे तमरो पीयर ग्रुप ए माने सब पळा आसीला फैमिली रे सब टू फर्स्ट के तुमको सब जिंस सिखोची योर मदर राइट मदर इज द फर्स्ट टीचर सेतले को हाउ राइट तमे तमरो रिलीजन विषय रे जानु छो तमे सोसाइटी रो नॉर्म्स विषय रे तमरो फैमिली रो विषय रे जानु छो सोसाइटी आउटसाइड रे केमती अछि ता विषय रे जानु छो थ्रू हुम फर्स्ट फ्रॉम योर मदर देन फ्रॉम योर फैमिली okay so this is socialization and socialization is very important as I said for transmitting knowledge values norms and every aspect of society from one generation to another generation okay this is how society is able to persist right amaro one question thila how society persist one of the part of very important part is socialization through society nijku persist kariki rakhi generations are coming and growing but the knowledge is being intact through the process of socialization okay eta hela tomaro deviance hela social control hela au kono ଗୋଟେ डाउट मैम डिफरेंस को लेके ଗୋଟେ डाउटଥିଲା कि डिफरेंस रे हमें रबरी थेफ्ट मर्डर रेप ए सब को इंक्लूड करि परिबो कि हाँ इटा भी तो डेविएंट बिहेवियर ना रेपिस्ट आर डेविएंट ड्रगिस्ट आर आल्सो डेविएंट ओके तो मैं या विषय रे बहुत ही इन डेप्थ पढिबो जंदी कहली रॉबर्ट के मॉर्टन रो थ्योरी रे कन्फर्मिटी एंड डेविएंस दोज हु आर कन्फर्मिंग जे माने एक्सेप्ट करूचंती सोसाइटी रो रूल्स एंड रेगुलेशन को कि जहां भी से कहूची कि इज एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द सोसाइटी से मन को कहा जाए कन्फर्मिस्ट आ जे माने करू नहांती तांको कहा जाए डेविएंट हला ओके कन्फर्मिटी थ्योरी ऑफ कन्फर्मिटी एंड डेविएंस रे पढिबो हला तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी रे देखिबो जंती तमे कहलो रेपिस्ट मर्डरर तापरे रॉबरी जे माने करचंती दे आर कंसीडर एज डेविएंट ओके आउ से डेविएंस रो केतडा वी कैन से ग्रे एरिया जंती कि मु कहली अल्कोहलिज्म रो तुमको देली केतना जागा रे सेटा को एक्सेप्ट करावे केतना सोसाइटी रे इट इज नॉट एक्सेप्टेड तो से ता विषय तुम कैटेगराइज केमती कराउ छी कहा को कन्फर्मिस्ट बोली कहा जाउ छी कहा को डेविएंट बोली कहा जाउ छी तार अलग अलग कैटेगरीज भी अछि हला सेटा इन डेप्थ तुम पढिबो मॉर्टन रो थ्योरी रे पढिबो हला हां तापरे तमरो केतरा इंपोर्टेंट टर्म अछि जंती कि एनोमी डकहाइम रो थ्योरी रे आसीबो एनोमी माने कोन एनोमी इज नोन एज द स्टेट ऑफ normlessness or we can say social instability okay डकहाइम एनोमी विषय रे कहथिले हला से कहले कि सोसाइटी रे जतले नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट ही जाए कि नॉर्म्स बहुत ही लीनिएंट ही जाए सेतले कोन हबो सोशल इंस्टेबिलिटी हबो आउ इट विल रिजल्ट इनटू एनोमी जंती कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हिजबो फॉर एग्जांपल तमरो डार्क एजेस रे हला जहां तमरो किंग आउ चर्च कोतला सब स्ट्रिक्टली फॉलो होतला दैट कॉज्ड इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी ओके तारो एग्जांपल तमे फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो भी नहीं पारिबो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे मोनार्की बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल करूतला बट after a point of time when people gain consciousness they started to revolt against the monarchy and it resulted into the downfall of monarchy तो ta through social instability hela a situation of normlessness created au anomy asila society रे एंती बेसी lenient hi jibo किछि rules and regulation हो नथिबो जा को जा इच्छा सेटा करिवो right that will also cause instability in the society and will create a situation of anomy hela that is anomy सेंती आ तमरो इंडियन सोसाइटी रे केतडा अछि टर्म तार पूर्वरु मु जंती कॉन्शियसनेस कथा कहली कॉन्शियसनेस रे तमरो गुटे अगेन फंक्शनलिस्ट तमरो डकहाइम रो थ्योरी रे पडिबो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विषय रे आ तमे कार्ल मार्क्स रे भी तम केंती वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस गेन कले क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ सेटा कार्ल मार्क्स रे पडिबा हला सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस गुटे टर्म
What is collective consciousness? Can anyone say? या विषय रे डरखाइम कहिथिले हला डरखाइम talked about collective consciousness. कि जानि छ collective consciousness माने कोन? No. Basically, जेतेबेले every member of the society come together or are unified. Okay, every member of the society come together are unified. How? Through shared beliefs and moral attitudes. This is known as collective consciousness. Then this is the role of religion. से कहते कि religious ritual perform डरखाइम कहथिले religious ritual perform कला को कोन होची जंती कि तमरो घरे जदी गुटे पूजा होची हैला. So all the members of the family are coming together and performing that ritual. So what is happening? They are sharing the similar beliefs, similar attitude. So that is called as collective consciousness. जंती कि तमरो आ गुटे जदी एग्जांपल लेबी जदी घरे कहार डेथ ही गला हैला कार डेथ हला परे गुटे 12 डेज रो गुटे बहुत ही लेंदी रिचुअल प्रोसेस फॉलो करा जाय राइट तमरो पणा हबो पिंड दिया जीवो सेतरे फैमिली मेंबर समस्ते सांगरे आसी की बहुत रे रिचुअल्स परफॉर्म करंती ओके तो से टाइम रे से रिचुअल्स रो काम कोन एबे बहुत जन को लागुथिबा इट इज वेरी हेक्टिक बहुत रे जिंसो करा होची बहुत रे पूजा होची बहुत एटा सब सीरियस जिंसो सब होची राइट बट मे बी से रिचुअल्स एथि हेक्टिक इतले करा होची दैट the loss of the family member जार भी loss हेची से rituals रे तमे engage ही जाउछो माने कोन होला तमे टिके तमरो माइंड डाइवर्ट होला राइट तो जेतु हेक्टिक रिचुअल हेला पर by the end of the day you feel very tired and you just go to bed तो माइंड एते से लॉस को नेकी ऑक्युपाई होनी so it is what it is doing the family is coming together okay trying to perform that ritual and they are collectively trying to overcome the loss of the family members okay it is unifying the members of the family सेंती फैमिली जदी गुटे सोसाइटी ना एंती लार्जर सोसाइटी रे जहा भी तमे करूछो सेडा को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोली कहा जाउची ओके मुझे एला कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैम मैरिज भी हे परिबो कि एतर एग्जांपल मैरिज हां मैरिज रे भी जंती कि तमरो मैरिज रे कोन दुईटा फैमिली आसी कि रिचुअल परफॉर्म करूचंती राइट एंड दे आर एक्सेप्टिंग ईच अदर दे आर गुड एंड दे आर बैड राइट एंड दे आर कमिंग टुगेदर एंड यूनिफाइंग राइट सेत्री भी गुटे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होची तमरो ओके तापरे एटा इब्न खालदुन विषय तुमको कहबाटा पासरे जेतिली तमरो रिडजर रे दिया आइची यांक विषय हला रिडजर रो इनिशियल केतरा पेजेस रे सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम देयर मोस्टली जतले हमें इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी विषय रे कहचु कि सोशियोलॉजी से स्टडी ऑफ सोसाइटी को थ्रू स्टार्ट हिची we think that it has started from or it has originated from the western society western thinkers mane eta start karichunti but it is not necessarily correct okay because in rigid it is mentioned that one of the very first person who started the study of society was this person known as Ibn Khaldun okay tanko bisare eti mu deichi it is I have taken it from Ritzer only okay so Abdul Rahman Ibn Khaldun thila tangor pura na so he belonged to Tunis from North America and born in an educated family. He was schooled in Quran, mathematics and history. In his lifetime, he served variety of sultans in Tunis. He spent 2 years in Morocco and etc. etc. Se was the first person je bhabithile that ame society ko tike study karibata chesta kariba darkar. Okay, so this thinking that it all started from the Western society and the Western thinkers started to establish or a vision to study the society is incorrect. Okay, so Ibn Khaldun was one of the first person. Aw se kebe thile tomaro bahut hi purna around he was like 1332 bole tomaro 12th century 13th century around hala to se jinso eti oda context mu nei thili ya bisare mu explain korata bhul jaithili okay so I have included here you can see तापरे या छोड़ा आउ केतडा तमरो टर्मिनोलॉजीस अछि इंडियन
सोसाइटी रो कॉन्टेक्स्ट जदि हमें देखिबा संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन पूर्वरु सुनिथिबा आई गेस सुनिचो कि संस्कृताइजेशन सुनिचो एनीवन यस संस्कृताइजेशन विषय रे केबे सुनिचो कि नो संस्कृताइजेशन संस्कृताइजेशन तमरो इंडियन थिंकर थे एमएन श्रीनिवास बोली से कॉन्सेप्ट देथिले तो दिस रिवॉल्व अराउंड योर कास्ट सिस्टम हला तमरो अपर कास्ट मोस्टली ब्राह्मण्स तांकर प्रैक्टिसेस तांकर सब जिंस को प्योर आउ बेसी हायर इंपोर्टेंस हायर स्टेटस दिया जाउतला राइट सोसाइटी रे तो तमरा लोअर कास्ट को जे बिलोंग करथिले से माने कोन करले कि they try to imitate the practices of this upper caste mostly brahmins why to gain more acceptance in the society तो initially sanskritization को से brahminization बोली से टर्म देथिले सो मोस्टली कोन हबो तमरो लोअर कास्ट लोक माने ब्राह्मण्स रो कल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करथिले व्हिच वर कंसीडर्ड एज मोर प्योर एंड मोर given more importance in the society higher importance in the society जंती कि वेजिटेरियनिज्म हला कि वेरिंग ए सेक्रेट तम जनेयु जहा कहउचो कि पूजा करवाटा नॉट ईटिंग मीट नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल से सब प्रैक्टिसेस करवाटा स्टार्ट करले व्हाई टू gain more importance in the society to gain more acceptance in the society and go up in the ladder of social mobility बुझिलो तो इनिशियली से ब्राह्मणाइजेशन को बोली ताकू टर्म देले तापरे से कोन देखले दैट नॉट ओनली ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस बट अदर हायर कास्ट प्रैक्टिसेस को भी सब अडॉप्ट करचंती तारोड ऑडियो ऑन अछि रे प्लीज टिके म्यूट कर दियो संतोष संतोष तुम्हारा ऑडियो टा टिके म्यूट करो ओके तो से माने कोन देखले तो एमएन श्रीनिवास देखले कि खाली ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस नहीं अलगा हायर कास्ट भी प्रैक्टिसेस को से माने अडॉप्ट करचंती तो गुटे जेनेरिक टर्म देबा पय संस्कृताइजेशन से कहले वेयर लोअर कास्ट इमिटेट द प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट okay the process where the lower caste imitate the practices of upper caste is known as sanskritization why to gain more acceptance in the society and to go up in the ladder of social mobility okay एडा गला संस्कृताइजेशन तापरे वेस्टर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन तो सुनी थिबो वेस्टर्नाइजेशन माने कोन व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन मैम वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करिवा कल्चरल होमोजेनाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कंज्यूमरिज्म मेटेरियलिज्म एवरो वेस्टर्नाइजेशन कांसेप्ट तमरो इंडिया रे केतले इंट्रोड्यूस हितला कॉलोनियल पीरियड करे हला तो सेतरे कोन ड्यू टू कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस वी अडॉप्टेड लॉट ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस ओके वेस्टर्न वे ऑफ ड्रेसिंग वेस्टर्न फूड हैबिट्स आगो जोडा हमें सकाळे तमे ब्रेकफास्ट रे देखियो हमें पराठा या फिर हमें डोसा इडली जोडा खाउथलो दैट रिप्लेस्ड बाय योर कॉर्नफ्लेक्स सैंडविचेस all those things hela food habits re changes lifestyle re changes dressing sense re changes way of greeting re changes that is known as westernization okay it came to India after colonial period mostly tame dekhibo student confuse jauchanti between westernization and modernization are two different concepts okay modernization is all about your technological advancement having a modern thinking rational logical thinking giving more to scientific
values okay से सब जिंस तमरो मॉडर्नाइजेशन रे आसीबो वेस्टर्नाइजेशन कोन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करबाटा को कहा जाय वेस्टर्नाइजेशन बुझलो तापरे आ गुटे तमरो वेस्टर्न इंपोर्टेंट कैपिटलिज्म okay what is capitalism capitalism माउसी from the word capital तार माने कोन कैपिटल माने कोन तमरो एसेट मनी हे गला प्रॉपर्टी हे गला मशीन्स हे गला हला so the one who are controlling the capital okay sorry the one who are controlling and owning the capital which includes private ownership it is known as capitalism okay capitalist mostly तमर इंडस्ट्रियलिस्ट गले कि कॉर्पोरेट सीईओ कॉर्पोरेट लीडर्स मन को कैपिटलिस्ट बोली कहा जाउची से माने सब कैपिटल तमर प्रॉपर्टी ही गला मींस ऑफ प्रोडक्शन है तमर फैक्ट्रीज हला मशीनरीज ए सब जिंस तमर मनी को कंट्रोल करचंती राइट एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क फॉर जनरेटिंग देयर प्रॉफिट ओके तांको पई केतेटा लोक काम करथिबे देयर लेबर्स ओके वर्किंग क्लास जे माने से माने कोन करिवे वर्किंग क्लास को बेसी समय पई काम करेबे आउ तांको कम पैसा रे से एम्प्लॉय करिवे हला लिमिटेड वेजेस रे तो सितरे कोन तांकर जहां भी सरप्लस जनरेट करचंती दैट वर्क्स एज देयर प्रॉफिट कैपिटलिज्म विषय इंडेक्स तमे कार्ल मार्क्स रे पढिबा हला सो कैपिटलिज्म इज जस्ट नो इट इज ऑल अबाउट प्राइवेट ओनरशिप and people controlling and owning the capital money property assets this is capitalism okay tapre au kono word achi any word that you want to ask जोड़ा तुमको problematic लागुची एटा तो सब बेसिक वर्ड टर्मिनोलॉजीज मु कहि देली आ किछि टर्मिनोलॉजीज तमे किछि ऐड करबा को चाहिबो एठी मैम अनदर वर्ड लेजिटिमेट और लेजिटिमेसी हां सेटा कोन मैं तारो एक्सप्लेन को कॉन्टेक्स्ट तमे कहउछो को थिंकर कॉन्टेक्स्ट एंती मैडम पॉलिटिकल सिस्टम रे आपन को जेटा अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी से पॉलिटिकल सिस्टम रसो और मैक्स वेबन को अथॉरिटी थ्योरी लेजिटिमेट माने कोन लेजिटिमेट माने कोन मैम जस्टिफाइड लॉ द्वारा justified which is backed by law right recognized by law that is known as legitimate हला तमे जंती मैक्स वेबर रो कहलो मैक्स वेबर 3 legitimate authority विषय रे कहिथिले हला okay if we are talking let's discuss about it 3 legitimate authorities legitimate is something which is recognized by law okay that you get a birth certificate after your birth so तुम by law तुमको recognize करा जाउची that you are an individual who is alive and you are also citizen of India right so that is legitimate you are a legitimate citizen of India and you are a legitimate human being who is alive तुम्हार birth certificate रो सेटा जाना पडुची right so max over 3 legitimate authority विषय रे कहिथिले गुडा होची ट्रेडिशनल आ गुटे charismatic आ गुटे होची तमरो लीगल रैशनल अथॉरिटी हला ट्रेडिशनल अथॉरिटी माने कोन जोडा बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज और कस्टम्स जेंति कि तमरो मोनार्की ही गला दिस इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी charismatic authority which is someone who have a very strong personality or a strong leadership ability and who can easily influence people जेंति कि तमरो महात्मा गांधी ही गले or we can say also Narendra Modi okay these are charismatic leaders then legal rational authority
legal rational rule from the word itself say, which is based on law or based on rules and regulations. ଯେମିତି କି ତମର government official, chief justice of India, okay, या फिर तमरो civil service officers. These are rational, your legal rational authority. Hala. So these authorities are legitimate authority. That means it is recognized by law. जेमती कि तमरो जेतकी भी administrative officers अछंती तांको constitution recognize करूची, president जे अछंती तांको constitution recognize करूची. So by law they are legitimate authorities. Okay, they are not illegitimate authority कि आसिले power बस देले, we are very powerful person, we are now going to control you. No, it is not like that. से situation रे कोन tyranny ही जीवो कि नहीं, या फिर autocracy ही जीवो. But country which is following democracy, we need more democratic ideologies, right? Democratic forms of election, electing government and electing various governmental posts, which is recognized by our constitution or some legal backing sithre roiba darkar, right? So this is legitimate authority. Okay, clear? Short tyranny माने कोन? हाँ, tyranny tyranny माने होची तमरो जेंति कि एग्जांपल देबी जदी रूल ऑफ औरंगजेब रो रूल को तमे टायरेनी बोली कोइ परबो, where he whatever he does was arbitrary, not for the benefit of the citizen. तारा जहा इच्छा आसला से सेटा करिवो against the will of the citizens, and the ruler can be very cruel with his policies. Okay, that is called tyranny situation hi jibo. Okay, very unfair and cruel rule is known as tyranny. तो मैम tyranny similar to dictatorship तो ही परिबो? Yes, dictatorship बेसी extreme dictatorship रे तमरो tyranny ही हेबार chances अछि. जेंति कि तमरो नाजी जर्मनी रे हितला under your Hitler. सेटा तमे Semitism anti-Semitism रे पढिबो हला. How mass genocide, mass killing, Holocaust hitila of Jews and other people who Nazi Germany and Hitler used to consider as undesirable. तांको mass killing कर दिया जाइतिला. Millions of people died. Okay, due to it. तो Semitism जेतु एबे एटा कहि देली तमे पढिबा आकु Semitism. Semitism in short is the culture and practices of Jews. तांको culture और practices को Semitism बोली कहा जाउची. And those who do not support it are, or the concept of spreading hatred towards Jews and their culture is known as anti-Semitism. Okay, means hatred towards Jews and their culture. हला Semitism, anti-Semitism. सेटा तमे पढिबो तमर रिलीजन रो कांसेप्ट सेटा आसीबला. मैजिक विषय रे पढिबो हला. मैजिक आउ साइंस और रिलीजन केंती इंटरलिंक्ड अछंती. Then another word, sacred and profane. या विषय रे डरखाइम कहिथिले हला. What is sacred in the society, what is profane in the society? Sacred रे तमे कोन इंक्लूड करि परिबो? और religious text, Quran ही गला, भगवत गीता ही गला, गुरु ग्रंथ साहिब. These are what? Bible. These are religious texts. They are considered as sacred. Since religious institution, tomorrow temple, church, gurudwara, masjid, these are sacred places. Okay, and there are sacred symbols, right? Christianity re cross, right? Hinduism re om, swastik. These are sacred symbols. जहाँ भी ritual perform करू जो, those are known as sacred rituals. Since profane माने कौन? Opposite of what is sacred. The things which are not considered as sacred. जेंति कि तमरो हे गला day to day objects. Chappal is not sacred. हला. आउ तमरो झाड़ू is not sacred. That is called profane. Things which are not sacred is called profane. Okay. Sacred or profane विषय रे तम पढिबो. आ गुटे पढिबो तमे totemism विषय रे. Okay,
टोटेम होची गुटे क्लैन रो हला गुटे क्लैन गुटे कुलर गुटे तांकर आइडेंटिफिकेशन कि से माने तांको सेक्रेड हिसाब रे कंसीडर करूथु गुटे सिंबल को गुटे क्लैन गुटे सिंबल को सेक्रेड हिसाब रे कंसीडर करूथु आ ताको वर्शिप करूथु दैट सेक्रेड थिंग इज नोन एज टोटेम जेंति कि तमरो विष्णुई कम्युनिटी या विषय सुनिथिबो राइट विष्णुई कम्युनिटी रो ब्लैक बक जोड़ा एबी भी तांकर चलीची अगेंस्ट सलमान खान black buck is considered as a totem for Bishnoi community in the sense it is a sacred we can say being sacred thing for the Bishnoi community se black buck को पूजा करंती तार protection भी करंती and if you are killing them it is against their every culture right तांकर culture रो against तमे पड़ेला it is a big insult to them okay तो totemism विषय पड़िबो तमे एंते हमरा सब अलग अलग रिलीजन अलग अलग टोटम रहउछि हमरा हिंदुइज्म रे भी पीपल गछ हला तुलसी प्लांट हला दैट इज अ टोटम फॉर अस राइट सेंते तमे एनिमिज्म आउट वर्ड आसीबो एनिमिज्म नेचरिज्म ओके नेचरिज्म होची नेचर वर्शिप एनिमिज्म होची द बिलीव दैट एवरीथिंग in the society has a spirit जेंती तमरा फायर रे स्पिरिट रहउची वर्षा रे स्पिरिट अछि पत्थर रे स्पिरिट अछि ट्री रे स्पिरिट अछि दैट इज नोन एज एनिमिज्म और स्पिरिट वर्शिप तमे जेतले करूछ दैट इज नोन एज दैट प्रैक्टिस इज नोन एज एनिमिज्म जेंती हमरा मोस्टली तमे हिंदुइज्म रे देखिबा को मिलिबो आ बहुते ट्राइबल कम्युनिटीज भी एटा करूछंती राइट तो हमरा जेंती अछि सेतिरे तमरा पळे आसीबो monotheism and polytheism monotheism is belief in one god जेंति तमर क्रिश्चियनिटी कि इस्लाम रे होची belief in one god polytheism is belief in multiple god okay जेंति हमर हिंदुइज्म रे we believe in a god of fire we believe in god of water god of land god of air right so this is known as polytheism okay so tomorrow एटरे तमे देखो गुडे legitimate authority important antisemitism semitism important sanskritization तापर social change कोन social stratification कोन social change तो तमे जानो थबो right a change in society तापर तमरो सोशल मोबिलिटी कोन दिस आर सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एनोमी कोन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यार विषय रे इन डिटेल्स इ नोट्स ता मैं तुमको सेंड कर देबी आउ सर भी तुमको कीवर्ड्स रो टर्मिनोलॉजीज रो गुटे पीडीएफ सेंड करबे हला तो या छोड़ा काहा को किछ डाउट रहला कि एनी मोर डाउट्स मैम आ गोटे कांसेप्ट हां हेजिमनी मैम हेजिमनी माने हेगेमनी यस मैम हेलो यस मैम सेटा हेजिमनी तमरो वॉइस ता बहुत लो सुबह हेगेमनी विषय रे कोच तो आगे मैम अच्छा hegemony होची when there is a dominance of one particular group or one particular class over other people हला सेटा को hegemony बोली कहा जाउची गुटे कल्चर रो बेसी डोमिनेंस रह जाउची बाकी मन को ऊपर हला आ जदी कल्चरल बेसिस रे देखबो सेटा को कल्चरल hegemony बोली कहा जाउची जेंति कि तमरो colonial period रे ब्रिटिश आइडियोलॉजी ब्रिटिश एजुकेशन was dominating over Indian education and Indian practices, Indian languages, right? So seta kono tomar cultural hegemony re asibo. Okay, so hegemony in simple terms if I define, then it is something where one group or one particular class, okay, they hold a lot of power and influence over others. है ना, जैसे कि तुम्हारा पाकिस्तान में
मुस्लिम डोमिनेंस बेसी अछि राइट ओवर अदर रिलीजन तो सेटा कोन मुस्लिम्स मन को हेगेमनी अछि तांकर डोमिनेंस अछि ऑन अदर रिलीजन तांकर कल्चर को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाउछि राइट सो दैट इज हेगेमनी क्लियर Yes, ma'am. तमे हेगेमनी रिलेटेड टिके पडिबो कॉन्टेक्स्ट आसीबो व्हेन यू आर स्टडीिंग कार्ल मार्क्स आल्सो हाउ रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास जे माने रूलिंग क्लास रो अछंती से माने केमती तांकर हेगेमनी मेंटेन करबा चेष्टा करिवे बाय मेकिंग चेंजेस इन द सिस्टम एंड मेकिंग चेंजेस इन द एजुकेशन ओके तांकर आइडिया को केमती से माने प्रीच करबाटा स्टार्ट करिवे दैट व्हाट एवर दे आर सेइंग इट इज करेक्ट ओके दे आर द सुपीरियर वन तो सेतिरे तमे पढिबो आउ काको किछि डाउट आउ किछि वर्ड रे डाउट No, ma'am. क्लियर सो आज हम खाली इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जेटा तुमको आपको पढ़ला बड़को इजी होबो से सब जिनसे डिस्कशन करना व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड हियर एंड आई हैव रिटन आई विल बी सेंडिंग इट टू यू इन टेलीग्राम ओके in details all the additional terminologies will be given to you in a separate pdf by sir okay so if no more doubts then let's wrap up we'll meet again in the next class okay so mu jaha bhi notes पठेबी bit थोड़ा देखि लेबो if there is any confusion any doubt then you can message me okay clear Okay, ma'am. Okay. thank you all for joining Thank you. Thank you, madam. ma'am.